हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राज। और आज अपन रिएक्ट करने वाले हैं आउटर साइड की वीडियो पे। और यहाँ पे दो वीडियोस हैं, अपन दो वीडियोस देखने वाले हैं। देख रहे हो यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे थंबनेल में नेपाल है। देख सकते हो यहाँ पे भूटान है। तो पहला हम देखते हैं भूटान। हाउ भूटान सर्वाइव बिटवीन चाइना एंड इंडिया। Have you ever looked at a तो इसमें अपन देखने वाले हैं। तो दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, छोटी वीडियोस हैं, इस पे रिएक्ट करने वाला अपन। डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक इन वीडियोस का है, जाके चेक कर सकते हो। ओके, आउटर साइड, हाउ भूटान सर्वाइव्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ओके, Have you ever looked at a map and noticed this tiny country called Bhutan and Bhutan. thought, how does it even survive between two of the most powerful nations on earth, China and India? It's not just small, it's surrounded. So why hasn't it been taken over? And why does Bhutan still exist? This is the story of how Bhutan survives between China and India, and the answer is way more fascinating than you might think. First off, Bhutan has fewer than 1 million people, so how has it survived? It all starts with geography. Bhutan lies deep in the Himalayas, just like neighbors like Nepal. Massive mountains act as natural fortresses, making the country incredibly difficult to invade. And Bhutan used that to its advantage. For most of its history, it isolated itself, literally. No foreign visitors, no internet, no social media, until the 1990s and 2000s. And before that comes even earlier history. In the early 20th century, British India had growing interests in Bhutan. But instead of colonizing it, they signed treaties, letting Bhutan remain semi-independent as long as it consulted the British on foreign affairs. When India became independent in 1947, Bhutan signed a new treaty, one that let it run its own domestic matters, while India advised it diplomatically and protected it militarily. That agreement still shapes Bhutan's foreign policy to this day. So what about China? Bhutan and China don't even have formal diplomatic relations. In fact, Bhutan is one of the only countries in the world that has never officially recognized China's borders. Why? Because there's a border dispute. China claims part of northern Bhutan and even built roads into disputed areas in recent years. This makes India very nervous, especially after the 2017 Doklam standoff, when Indian and Chinese troops nearly clashed on Bhutanese territory. Since then, India has doubled down on helping Bhutan, including security, roads, and trade. So, how does Bhutan survive near China? By staying extremely close to India for protection and economic support, while तो एक बेटर दोस्त बनाना फायदेमंद हो सकता है कभी-कभी। avoiding conflict with China. Basically, India is its friend, and it avoids contact to anyone else. And that proves to you having one good friend might take you very far. Nice. Okay, तो सेम आई थिंक नेपाल का भी यही होगा ऐसा कुछ। Have you ever let's watch. looked at a map and seen this tiny country called Nepal and wonder how does it even have a spot between two of the biggest nations on earth, China and India? With a land area so small, you would think either China or India would have taken it. But Nepal still stands strong. This is the story of how Nepal survives between China and India. And to find out the answer, we need to take a deep step back. First off, Nepal is actually not that small. It's about the size of Greece, or roughly 1/3 the size of California. But compared to its neighbors, it's tiny. China has over 1.4 billion people. India, nearly the same. Nepal, around 30 million people. So how has it stayed independent? It starts with geography. Nepal is home to some of the most rugged terrain on Earth, including Mount Everest. The entire country is basically inside the Himalayas, making it incredibly difficult to invade or control. Historically, that's been Nepal's secret weapon. In the early 1800s, the British Empire went to war with Nepal in what's now called the Anglo-Nepalese War. Nepal lost some territory, but it held onto its core land near the mountains and kept its identity. Even the British respected the Nepalese warriors, especially the Gurkhas, who are elite soldiers who are serving in the British Army still to this day. Fast forward to the 20th century. As India gained independence and China underwent its own revolution, Nepal managed to stay out of direct conflict with either of them.
It walked a careful diplomatic line, playing neutral but friendly with both neighbors. During the Cold War, Nepal declared itself a non-aligned country, refusing to take sides between the US and the Soviet Union, just like it refuses now to lean fully towards either China or India. And that strategy, it worked. Today, ओके न्यूट्रल रहना कि भाई हमें कोई फर्क, बेसिकली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, बस हमसे दूर रहो, वो वाला सीन। Nepal relies on India for trade and cultural ties, and China for infrastructure and investment. अभी कुछ ज़्यादा बंदा जाके वहाँ पे उछल रहा था, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी चाइना में जाके। It plays the middle ground, just like Mongolia, between Russia and China, and that's what has made Nepal survive between China and India. Nepal survive between China and India. Ground. सिंपल कि भाई तुम छोटे हो, तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है, तो तुम्हें साइलेंट रहना होगा, है ना, न्यूट्रल रहना होगा, साइलेंट रहना होगा, पंगे नहीं, जिससे जो हेल्प मिल जाए ले लो, और उसी से सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा कुछ खास वैसा नहीं है कि भाई इनके पास ये वाला वेपन है जो बहुत ही खतरनाक है, या इनके पास, बस ये है कि ये हिल वाले एरिया में है, ये टेरेन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, और उनके पास गोरखा बहुत खतरनाक है। ओके नाइस। तो क्या तुम्हें चीज़ें पता थी? कमेंट सकते हो। तुम्हारे पास अगर कोई और बेहतरीन फैक्ट्स हैं तुम कमेंट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग और बहुत सही जा रही है कंट्रीज, बट और भूटान में आई थिंक वही था ना, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह नहीं होती, और मैंने सुना कि वहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा वर्क करती हैं मैन से। फीमेल्स भी हर जगह वर्क करती हैं, जैसे होटल्स में या फिर डिफरेंट जगहों पे फीमेल्स ज़्यादा काम करते हुए तुम्हें दिखेंगी। मैंने ऐसा देखा है कितने व्लॉग्स में बंदे बोलते हैं। जैसे इमेजिन की एक काम बताता हूँ, जैसे मान लो होटल्स में सामान पिक करते हैं, तो तुम्हें वहाँ पे फीमेल्स मिल जाएंगी वो सामान पिक करने के लिए। तो जैसे हम इंडियंस जाएंगे या कोई जाएगा तो वो बोलेगा कि यार फीमेल उठाएगी, हम भी उठा लेते हैं, बट वहाँ पे ऐसा ही है। मतलब मैंने सुना है, कितना सही सुना है कितना गलत सुना है मैंने जाके देखा नहीं है, बट ऐसा आई थिंक ट्रू है, मैंने व्लॉग्स वगैरह में देखे हैं मोस्टली। तुम कंफर्म कर सकते हो इन चीज़ों को, तुम्हें और कुछ डिफरेंट फैक्ट्स पता है भूटान और नेपाल के, तुम कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।